Right. Hello everyone. Good to be back. बहुत दिन बाद बहुत दिन तो नहीं मेरे ख्याल से 10-15 दिन बाद whatever, but it's good to be back live and to speak with you all and take your questions. Uh, क्योंकि हो गए अभी हफ्ता 10 दिन तो हो ही गया आईपीएल का. I remember IPL के पहले we did a live. So let's start with all the questions and all, because obviously सबकी नजरें सिर्फ आईपीएल में नहीं है. आईपीएल के बाद जो वर्ल्ड कप होने वाला है, आई थिंक एवरीवन's thinking on those lines. At least I am thinking on those lines कि भैया किस किस हालत में है इंडियन टीम, और जो इंडियन टीम जो सिलेक्ट हुई है. So that's been one of the things. चलिए पहले अनिकेत से का सवाल ले लेते हैं. Hello, so my question to start off is, will we see Chahal in place of Rahul Chahar, as we saw Rahul's lack of form and consistency, and the opposite in Chahal? By the way, why you aren't uploading reviews anymore? Aniket, आज ही मैंने किया है. The idea is कि देखो सबने रिव्यू तो मतलब मैचेस तो देख ही रहे हैं. So from the review perspective, the idea is to pick out a few points and all, but I'm trying to be as regular as possible, Aniket. So anyways, that's gone. तो पहला सवाल है आपका, चहल in place of Rahul. I can understand that. पहली बात तो मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा था कि चहल मतलब जो रिजर्व्स में भी नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड चाहर डिड वेल, जो इसके पहले वाला सीरीज था. श्रीलंका में भी डिड वेल, इंग्लैंड वाला सीरीज भी डिड वेल. सो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बट आई वाज लिटिल सरप्राइज नॉट टू सी चाहल इन इवन इन द रिजर्व्स. बट ही इज बॉलिंग वेल, सो दैट इज अ गुड थिंग. और मुझे लगता है 10 अक्टूबर तक जो है, यू कैन मेक अ फ्यू चेंजेस. पता नहीं कितने सारे चेंजेस होंगे, लेकिन यू कैन मेक अ फ्यू चेंजेस. सो एटलीस्ट चहल शुड बी देयर इन द रिजर्व्स, कि अगर कुछ किसी को होता है तो एटलीस्ट यू हैव दैट ऑप्शन. दैट इज वन. सेकेंडली, चाहर, देखिए पहले 2-3 मैचेस उतने खास गए नहीं, बट यू स्टिल हैव टू बैक अ बॉलर, कि जस्ट बिकॉज 2-3 मैच में विकेट नहीं मिला एंड ऑल दैट, सो यू कांट रियली बी इतना क्रिटिकल. बट हाँ, दूसरी तरफ चहल इज लुकिंग गुड. ये मैं मानता हूँ कि चहल इज डेफिनेटली लुकिंग गुड, एंड आई वाज स्पीकिंग टू हिम परसों. एंड वो कॉन्फिडेंस वाली बात है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. सो ही थिंक्स ही इज गॉट दैट कॉन्फिडेंस बैक एंड इज बॉलिंग वेल. Let's see क्या होता है. Yeah, let's see क्या होता है, अनिकेत. Right. So we have Rosu Entertainment. Is Sunil Narayan okay? That's your favorite, Rosu. Okay. The most underrated T20 legend. Love from Nepal. Love right back at you, Rosu Entertainment from Dubai, India, wherever. And Sunil Narayan, the most underrated T20 legend. I don't think so. क्योंकि जब भी T20 की बात आती है, एंड वी डू टॉक अबाउट सुनील नारायण, if somebody has to make an T20 team, uh, an all-time T20 team, I think Sunil Narayan's name would be there, should be there. At least I don't underrate him. No chance ever. So yeah, I mean, I mean, I'll be very very surprised अगर कोई ये कहता है कि he's not a T20 legend, because obviously with the ball what he's done in the last 10 odd years, it's been absolutely fabulous. और अभी भी चल रहा है. He's still going strong. In fact, last game, that 21 of 10 balls or whatever it was, I think 9 balls, 10 balls, that was so crucial. So last 2-3 साल में with the bat also he started to contribute a lot more. And also bowling में we've got to respect him for what he's gone through in the last 3-4 years. कि आप बचपन से एक एक्शन से बॉल डाल रहे हैं, for whatever reason, ठीक है आपका एक्शन सही नहीं था, then you know after playing so much of cricket, after getting so much of success, if you have to remodel your action जो उन्होंने किया है पिछले 1-2 साल में, and then still be as effective, I think that demands a lot of respect. At least from me it does. But yeah, so I don't think he's underrated. At least I don't underrate him. I'm sure you don't, Rosu. Right. So next one, who do we have? Cricket with Sid. Arre, Sid. Okay. Sid again runs a YouTube channel. Please do have a look at him. He was with us. I mean, he's a fabulous anchor as well. Cricket anchor, sports anchor. Okay, so what's the point of announcing the team so early when the final cutoff date is October 10? Might as well take IPL into account and announce on the 10th once and for all. Said the thing is कि there are these dates that you have to follow. ICC के dates हैं, so you have to. It is not India, but everyone has.
So you have to follow these deadlines given by the ICC. तो based on that you do that. 10th October इसलिए एक final date है that is not meant for changing the team based on performances or form. 10th October is generally the date to give the final 11 कि कोई अगर इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग forget IPL, their idea before an ICC tournament is कि people are countries are still playing bilateral series ये वो, so there could be injuries and all that and stuff like that. So I think to a great extent that जो last deadline है 10th वाला is because predominantly because of that. So as far as giving out the team and all, you have to follow. I mean, that is the rule. I mean, ICC needs the team by then. Or 10th, जो है, I think teams will make a few changes based on maybe form, maybe. But those changes will be एक या दो player, not more than that, is what I think, Sid. Right, but good to have you here, Sid, and thanks for logging in. Right. Okay, who do we have? Purna. Purna, why is Ashwin an easy prey in any sportsman spirit debate? True, Purna. Acha, this also, if you haven't seen the video जो आज मैंने डाला है regarding this whole incident, please have a look at it. I think Ashwin, because one, he's outspoken. So obviously anyone who's outspoken straight away becomes a target. Or especially if that point of view is not in tune with the so-called tradition or the basic जो mindset है, so that becomes rather even more easier. जो मुझे ये लगता है कि we have to be a little more civil in showing our disagreement. मुझे ऐसा लगता है. I mean, disagreement is part and parcel and is good and is important. ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो आप कह रहे हैं वो सही है. So disagreement is very very good and it's very very important. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप डिसएग्री करते हैं, आप मुझे कुछ कहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम ऑल्सो लर्निंग, राइट, कि चलो सिर्फ मेरा ही नजरिया नहीं है, कुछ और भी नजरिया है. But I think we have to be a little more civil in showing our disagreements. I think the biggest problem is that a sportsman spirit, Purna, if you just go and have a look at that video, I think it's such a vague thing to say, a sportsman spirit. How do you define sportsman spirit? I mean, who defines sportsman spirit anyways? Right? So it's a very very vague term to use. मतलब जो आपको सूट करता है, मैं आपको not आपको, but generally people को जो सूट करता है, that becomes spirit of the game. अगर आपको सूट नहीं करता तो that is against the spirit of the game. So yeah, I just find this term very very vague and very loosely used as well. काफी loosely used is what I think, Purna. Again, my views are there on that video. ज़्यादा लंबा नहीं है, 4-5 मिनट का है. Just go have a look at it. Right. Who do we have? Karthik Mathur. Concern about mental health of our players. Yes. After T20 World Cup, we have a long season. Karthik, I completely agree here. Or in general, वैसा tough है. अगर if you look at the schedule, as it is, it's tough. Or now that because of the bubble and you know these challenges that we have अभी और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि सही मानों में एक बबल से दूसरा बबल, फिर अगला बबल, फिर अगला बबल, एंड इट्स क्वाइट टफ, इट्स वेरी टफ. और मैं आज से नहीं कह रहा, और ना ही मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ, कार्तिक, और ये मेरा मानना है फॉर लास्ट 4-5 years. आई थिंक देयर शुड बी अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट विद एवरी टीम. अभी तो और ज़्यादा because of these extraordinary times, but I do believe there should be a sports psychologist with teams to help people, क्योंकि वैसे इतना high pressure situation में रहते हैं ये सारे players, because you need to perform every time, the spotlight's on you, you're always under the scanner. It's not easy. और ऊपर से obviously these times are always going to be very very challenging. So it's always good to have someone who's trained to handle, who's trained to handle these situations around the team, around the players. Yeah, it's not going to be easy, Karthik. I completely agree. Right. Cricket talk with PY. Sir, India only select only 3 pacers in squad. So will Bhuvi form her team India chances as he's a leading pacer?
क्रिकेट टॉक विद पीवाई, यस। आई थिंक थोड़ा सा मुझे भी, इनफैक्ट इफ यू गो बैक एंड लुक एट दैट वीडियो आई मेड when the team was out, I was a little surprised to see three seamers सिर्फ। और एक साथ में और एक इशू ये है, कंसर्न रादर, कि हार्दिक ने अभी तक बॉल नहीं डाला है। तो हार्दिक डालते हैं तो फिर थोड़ा बैलेंस ठीक लगता है, राइट? देन यू हैव थ्री सीमर्स और एक बाहर एज अ दिस थिंग। बट वो भी अभी तक नहीं उन्होंने बॉल डाला है। आई एम श्योर ही विल बॉल, बट वी कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, राइट? उनको डालना है और अच्छा डालना है। सिर्फ डालने से तो होगा नहीं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप हियर। सिर्फ डालना नहीं है, अच्छा डालना है। साथ में जैसे आपने कहा, भूविका, शामी इज bowling well, obviously Bumrah is Bumrah, so but yes, Bhuvika form is thoda sa, a little bit of a concern. I do agree. He hasn't looked at his best. पहले लेग में obviously he did not, which I can understand, क्योंकि काफी इंजरी, काफी दिन बाहर थे, इंजरी के चलते फिर आए वो। Then Sri Lanka he bowled well. I thought he bowled better than the first leg. लेकिन second leg में दोबारा he, this could also be, now that I'm thinking about it, this could also be थोड़ा सा वो SRH का जो टीम एनवायरनमेंट मुझे थोड़ा हल्का दिख रहा है। इवन यस्टरडेज गेम ग्राउंड पे जब मैं देख रहा था प्लेयर्स को, थोड़ा सा हो जाता है, एंड आई डोंट ब्लेम द प्लेयर्स फॉर दिस, बिकॉज जब आप इस हालात में होते हैं थोड़ा सा हो ही जाता है। तो आई डोंट नो, इज इट बिकॉज ऑफ दैट या जेन्युइनली ही इज नॉट इन फॉर्म? बट यस, आई मीन, bit of a concern, I agree. Yes, who do we have now next? Uh, Comment Locum. Okay. Sir, will Fab Duplessis get a call from South Africa for World Cup T20? He's been in great form. I won't be surprised कि क्यों, एक तो मुझे पहले ये नहीं पता लगा कि क्यों नहीं है। इट्स नॉट दैट साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा टैलेंट है एंड देव बीन परफॉर्मिंग like world champions or whatever. So I was a little surprised not to see him, but will be interesting actually। क्या होगा, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 10 अक्टूबर तक सिर्फ इंडिया नहीं, आई थिंक a lot of teams will make a few changes। ऐसा मुझे लगता है, few मतलब एक दो ही सही, लेकिन there will be changes with a lot of teams। So it'll be interesting to see that। Hmm. Sorry, and right, Viraj Patwa, sir, views on pitches in Sharjah। आई वॉज नॉट सरप्राइज पहले मैच के दौरान, क्योंकि जब मैंने पिच देखा पहले मैच में, आई वॉजंट सरप्राइज कि ऐसा खेला है। क्योंकि क्या हो गया कि पिछले आईपीएल के बाद जो टॉप सॉइल है दैट वाज रीलेड, और रिले के बाद क्या होता है कि थोड़ा वक्त चाहिए होता है फॉर द पिच टू सेटल डाउन एंड मैचेस होने चाहिए। क्योंकि जैसे मैचेस होते रहते हैं, बॉल गिरता है, रोल होता है, मैच का प्रिपरेशन पिच का अलग होता है एंड नॉर्मल प्रिपरेशन अलग होता है। तो जितने मैचेस खेलते हैं उतना ज़्यादा बेहतर हो जाता है, टॉप सॉइल सेटल होता है। इस लेग के पहले पिच री लेग के बाद मैचेस ही नहीं हुए। मेरे ख्याल से एक या दो स्कूल के मैचेस हुए यहाँ पे, तो मैचेस नहीं हुए, तो उसे सेटल नहीं हुआ। तो अगर आप देखेंगे धीरे धीरे बेहतर खेलता जाएगा, ऐसा मुझे मेरा मानना है। शारजा का पिच जितने मैचेस होंगे उतना सेटल होता जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नॉट जस्ट वहाँ पे, मुझे लगता है कि दुबई और आबू धाबी के भी पिचेस और बेहतर होंगे, और ज़्यादा जैसे हमने पिछले साल देखा था वैसे खेलने लगेंगे। और हफ्ते 10 दिन बाद आई थिंक इट विल बी एट इट्स बेस्ट अराउंड द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के जो मैचेस हैं, या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, दैट टाइम आई थिंक मुझे लगता है कि इट विल बी प्लेइंग एट इट्स बेस्ट, ये तीनों पिचेस, तीनों वेन्यूज। राइट। That's what Viraj Kaurik. Okay, sorry. Who do we have next? Cricket world today. Poonam Raut has given a spirit of cricket to cricket Australia. I'm sorry, मैं आज देखा नहीं, तो cricket world, if you can let us know also कि क्या हुआ है. I'm extremely sorry, but you know what? I was so happy to see India जिस तरीके से स्टार्ट किया, स्मृति की बैटिंग, इवन शेफाली स्टार्ट मिलने के बाद शी डिडंट कैपिटलाइज, बट
पिंक बॉल टेस्ट पहली बार, and that too not having played a lot of days game in the last 2017 के बाद से, uh, to bat and apply themselves. I think it was absolutely brilliant. A spirit of cricket again, cricket world. I don't understand that. I don't understand the term spirit of cricket. Uh, Anyways, I mean, like I said in the video, थोड़ा देख लीजिए. My view is very simple. Um, दायरा है, boundary are the rules. You can't cross that. That is an absolute no-no. But within the boundaries रह के you can draw your own line, as far as spirit of cricket is concerned. So it's up to you. I think, okay, what has happened is, she walked off, even though umpire had given not out. She had edged the ball. Yeah, I mean that's brilliant. खैर अभी रिव्यू सिस्टम भी आ गया, तो इफ you've edged it, you've edged it. अगर आप नहीं तो ऑपोजिशन ले ही लेगा, तो रिव्यू, that's that. So again, spirit of the cricket, I don't want to get into that anymore. Cookies live कहते हैं, what could be the possible playing 11 for today's match as Gale is not available? Will Punjab Kings suffer a loss? uh, राइट, मुझे ऐसा लगता है कि, आई मीन, सी, पंजाब किंग्स का पता नहीं यार. एक तो पंजाब का मुझे ये नहीं पता लगता कि, आई मीन, देव बीन द मोस्ट एंटरटेनिंग टीम, दैट इज फॉर श्योर, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. क्योंकि टिल द लास्ट ओवर आपको पता नहीं है कि पंजाब जीते हुए पोजीशन से भी हार सकती है, हारे हुए पोजीशन से भी जीत सकती है. So I mean, with Punjab, I seriously don't know. And but the thing is, because Kolkata is in great nick, momentum, form, it'll be interesting. It'll be a really interesting game. और साथ में the interesting part is this, कि अगर पंजाब और कोलकाता दोनों के टीम्स देखें तो it has been predominantly the bowlers who've done well. अगर जो भी मैचेस जीते हैं, अगर स्ट्रॉन्गर सूट बोलना है तो कोलकाता के लिए भी मुझे लगता है काफी हद तक, इवन दो देयर बैटर्स हैव डन रिलेटिवली बेटर. और पंजाब के लिए भी आई थिंक द bowling of both these teams have been really good. So it'll be interesting. And as far as Gale is concerned, I think they have enough, so to say, firepower overseas. I mean, मैं वही अचानक में याद आया कि जरा नजर तो डालूं कि कौन है. माकरम is looking good overseas. Huh, they might have to make a few changes. Will be interesting to see anyways. But yeah, bottom line, Punjab, the most entertaining side of this tournament. Right, who do we have next? G Paul, sir, what are the chances of KKR making the top four now that Russell might also not be available? Yes, Russell, as far as I know, will not be available. It'll be touch and go for World Cup as well, is what I hear. Okay, rumors, no confirmed news. So yeah, but the chances of KKR, see, the thing is ki it's a chota sa tournament and they're kind of peaking. The momentum is with them. So I think there's a very good chance. क्योंकि somehow Mumbai का भी, you don't know. Again, Mumbai is starting to win games. That'll be interesting. क्योंकि दूसरी तरफ चेन्नई, दिल्ली और बैंगलोर, you can say these three are in pole position. Chennai is already qualified. Delhi 16 will. Even Bangalore, yes. So fight जो है is to a great extent, I think, is going to be between Kolkata and Mumbai. Obviously, Punjab still there. RR थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, but Punjab भी, because they haven't been consistent. So it boils down to Mumbai and Kolkata. And Kolkata, the kind of cricket they are playing, or also the momentum hai, yeah, very good chance, I think. Yeah. Right. What else? Okay. Cricket World, sir, can Morgan bat at number 3 or 4 by keeping his form for England? Uh, yeah, I mean, I'm sure that's a concern for him and also for England. I mean, he's one of the main players as far as that English middle order is concerned. Or more importantly,
The style of cricket that England plays, or even in this case, Kolkata is playing. So you go hard at the top, right? You go tak 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 tak. So अगर जल्दी विकेट गिरता है, तो you need that solidity in the middle order. चाहे चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो इंग्लैंड हो. And Morgan gives that solidity in that middle order England के लिए और कोलकाता के लिए, and him being in form is very very important for both the teams. Can he come at number 3? Yeah, Rahul Tripathi is doing so well for Kolkata at number 3. I don't. Why do you want to change it? Morgan at 4, yes. Why not? Morgan at 4 makes sense. I mean, or agar, especially if there's a good start, come at number 4. At least can give himself some time. But yeah, I mean, even last game में was a bit of a this thing कि जिस तरीके से out हुए वो अश्विन को and all that. But yeah, it's important for Kolkata and England that someone like Morgan gets in form. Yeah. Right. Who else do we have? Himraj Singh Gohil साहब पूछ रहे हैं, is there even a proper all-rounder other than Jadeja in Indian cricket team at the moment? Uh, I mean, I'll call a wicket-keeper all-rounder, but I know where what you're talking about. Uh, yeah, I mean, देखिए, डालेंगे तो ज़रूर अपने हार्दिक बॉलिंग डालेंगे ज़रूर, बिकॉज़ अगर वो बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, देन इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी देन. लेकिन अभी तक डाला नहीं है, तो भैया कौन कैसे फॉर्म में है, यू डोंट नो, राइट? अभी तक डालते हुए देखा नहीं है, सो इट्स गोना बी इम्पोर्टेंट. एंड यू आर राइट, आई मीन एज ऑफ नाउ, अगर आज के दिन इस वक्त अगर आप सोचे तो या रविंद्र जडेजा ही हैं जो सो कॉल्ड ऑलराउंडर हैं, और एज इन बॉलिंग ऑलराउंडर. और वैसा आई मीन हार्दिक, आई होप ही स्टार्ट्स बॉलिंग सम टाइम सून. जैसा मैंने कहा कि सिर्फ बॉलिंग करने से नहीं होगा, अच्छी बॉलिंग भी डालनी जरूरी है ना. सो यू हैव टू हैव दैट फॉर्म ऑल्सो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉलिंग, बिकॉज यू हैव, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सम अदर इश्यूज एज वेल. क्योंकि आपको 3 सीमर तो चाहिए होंगे. तो आप अगर 3 सीमर देख रहे हैं, तो आप ये भी चाहते हैं जो आपका थर्ड सीमर है वो बैटिंग करे, देन ऑब्वियसली द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू योर, टू एटलीस्ट माय माइंड, 2 नेम्स इज दीपक चाहर एंड शार्दुल. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो सिर्फ बॉल ही नहीं डाल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में भी, अच्छे बॉलिंग फॉर्म में भी हो हार्दिक. राइट. नाउ हु डू वी हैव? Avi AHS, I said, do you think Shahbaz Ahmed should be playing in all the matches for RCB, as he's a good bowler and gets wickets whenever he bowls and bats well, and he's a gun fielder? Yeah, absolutely. Absolutely. मुझे लगता है शाहबाज, और शाहबाज का मुझे अच्छा ये लगता है, और मैंने क्योंकि उनको देखा भी हुआ, सो थोड़ा फेमिलियर भी हूँ. वो भी बंगाल से खेलते हैं. And he's like a 100% guy. मतलब he would want to contribute, bat, say balls, and he's very smart. Maybe not as naturally gifted, maybe उतना गिफ्ट नहीं है, नेचुरली टैलेंट जिसे हम कहते हैं, लेकिन उनका जो वो जिगरा जिसे हम कहते हैं, जिगरा हो या गेम अवेयरनेस, क्रिकेट आईक्यू इज वेरी गुड, इज वेरी शार्प. तो यस, आई मीन, मतलब ही विल कंट्रीब्यूट. अगर पिच में मदद ना भी हो, तो ही हैज दैट क्रिकेट आईक्यू और स्मार्टनेस कि भैया ऐसे पिच में कैसे डालना है, रन कैसे रोकना है. और जैसे आपने कहा, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट, और फील्डिंग तो ऑब्वियसली इज वन ऑफ द better fielders that I've seen. Right, yeah. Right, who do we have next? Soumya Zaid. Okay. What has changed for RCB? Soumya पूछ रही हैं. Okay, what has changed for RCB? मुझे लगता है कि एक तो Maxwell's form that has changed. Because पहले क्या था, it just seemed over dependence on Virat and ABD. Suddenly with Maxwell there, and Maxwell playing the way he is, especially the way he is, I think it's the focus is not on them anymore. तो उससे क्या होता है कि विराट एंड एबीडी कैन प्ले अ लिटिल मोर फ्रीली, स्पेशली विराट, क्योंकि वो मैक्सवेल के पहले आते हैं, तो ही कैन प्ले अ लिटिल मोर फ्रीली, नोइंग के पीछे सिर्फ एबीडी नहीं है, Maxwell भी है. So that I think is helping the whole thing. Obviously, Padikkal, if you see Padikkal playing, obviously last season also he was very good, but he's just continued.
एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि जनरली क्या होता है कि काफ़ी लोगों का देयर इज समथिंग कॉल्ड द सेकंड सीजन सिंड्रोम, कि पहला सीजन अच्छा जाता है, लेकिन सेकंड सीजन आते-आते क्या हो जाता है कि जो ऑपोजिशन है नोज़ यू बेटर, दे मेक बेटर प्लान्स एंड यू नो एंड टेक यू लिटिल मोर सीरियसली। तो वो सेकंड सीजन सिंड्रोम नहीं दिखा है पार्टिकल, दैट जस्ट टेल्स यू हाउ गुड पार्टिकल इज़। साथ में बॉलिंग वाइज़ ऑल्सो I think Jamieson पहले leg में I think that has made a difference, or the fact that RCB इस साल have not played in Chinnaswamy. You know, पहला leg भी अगर आप देखें, क्योंकि that's an absolute nightmare for bowlers. So the bowling side has come good, and batting obviously the Maxwell effect, I'd say. Yeah, right. Roshan Patil. Sir, can India play Shreyas instead of Pant with Rahul keeping wickets? Pant doesn't have good record in last two IPL season and in international cricket. I'm sure Roshan up international cricket, when you're saying you're talking about T20. That is a possibility. Uh, the other possibility I'm thinking is, what if Virat does not open? Because you have two guys apart from Rohit who are in good form, openers, KL Rahul, Shikhar. So what if Rohit opens with one of them, Virat at three, Surya at four? I know he's not in form at four, and then yeah, Shreyas or Rishabh. See, my only concern is Shreyas right for number five in T20 cricket? जैसे, see, my point is, somebody the other day was asking about Sanju. My point is, Sanju is obviously, he's in great form, he's playing brilliantly. But is he right to bat at number five? Is he the right player? वो बहुत जरूरी है. At times we just look at somebody's form. We also have to look कि भैया इंडिया जब खेलेंगे ये players, will they fit in their position? So वही मेरा सवाल है. श्रेयस at number three, at number four, still fine. But at number five, is he a better option than Rishabh? I do understand, रोशन, जो आप कह रहे हैं कि मुझे अभी भी ये नहीं लगता, मुझे लगता है कि ऋषभ still has to find his टेम्पलेट T20 क्रिकेट में, द राइट टेम्पो. तो वो एक चीज़ ज़रूर है. बट मेरा इस सवाल के साथ साथ जो सवाल मेरे दिमाग में आता है इज, शी इज़ द राइट पर्सन टू बैट एट नंबर थ्री. एट नंबर फोर अगर आप कहते हैं कि इन प्लेस ऑफ सूर्य, फॉर्म में नहीं है लेकिन फिर भी सूर्य, आई वुड लाइक टू सी अगले एक दो गेम में सूर्य कैसे बैटिंग कर रहे हैं. बट या, आई मीन, इट्स अ फेयर पॉइंट दैट यू मेक, रोशन. आई वुडंट डिसएग्री विद इट completely either. Right. Okay, Cricket World, sir. What are your four players should each IPL team retain for mega auction? Cricket World, I'll be honest, I have not thought about it. I think it's too early. क्योंकि आपने जैसे फोर प्लेयर्स कहा, कि आई नो देर आर रूमर्स गोइंग अराउंड कि तीन प्लेयर, चार प्लेयर, राइट टू मैच कार्ड एंड ऑल दैट. आई डोंट नो. सो and I, honestly speaking, have not thought about it as of now. Mega auction will happen end of January. So let's start thinking about it a little bit. I mean, I'll start thinking about it in month of December, because current form वगैरह भी decide करेगा. I doubt whether there'll be teams who would want to retain four. I mean, for example, SRH is a great example. I know Mumbai would want to. I know Delhi would want to. So it'll be interesting, actually. So yeah, my answer is, by December I'll start thinking about it. Right. Dhruv Garg, do you think there will be some changes in the Indian squad? What changes will you make? Dhruv, I think there might be a few changes going by what I see. What changes? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आई डोंट माइंड सीइंग विराट बैटिंग एट थ्री, क्योंकि जिस तरीके से अभी इस स्क्वाड के साथ अगर आप टीम को बनाएं, तो आप अगर रोहित और विराट ओपन कर रहे हैं, तीन चार पे आप ईशान और सूर्या देख रहे हैं. हाँ, उसके बाद ऋषभ एंड जडेजा एंड हार्दिक एंड ऑल देख रहे हैं. लेकिन जिस तरीके से सूर्य और ईशान बैटिंग कर रहे हैं, फॉर्म में है रादर, आई वुड रादर हैव विराट एट थ्री और ओपन विद रोहित, शिखर और केएल राहुल, एंड विराट एट थ्री, सूर्य एट फोर, ऋषभ फाइव,
Jaddu 6, Hardik 7, Bhuvi at 8, Varun Chakravarti 9, 10, आपके obviously Bumrah, and yeah, and then 11 वो option आप खुला रख सकते हैं कि you want an extra batter, you want a spinner or a fast bowler, वो option खुला रह सकते हैं. Right, so that would be roughly speaking my team. Yeah. Right. Valuable distribution, right? Do you think RCB can win this time? And should they bat AB at 3 and Bharat at 5? Should Arshdeep, Harsha, and Rituraj given a chance in T20 against New Zealand? Also predict the bowling attack of India in T20 World Cup. All right, quite a few questions. Okay, पहले एक एक करके चलते हैं. AB at 3. Okay, AB at 3, जितना मर्जी हम कह लें या चालें, I don't think that will happen. And I also think कि जो वो आ रहे हैं, एंड आई सेड दिस ऑन एयर कमेंट्री के टाइम भी, मुझे लगता है आरसीबी का एक सेट पैटर्न है कि पहले 6 ओवर में मैक्सवेल नहीं आएंगे, तभी 3 नंबर पे दे वांटेड एन इंडियन डोमेस्टिक. पूरे सीजन अगर आप देखें तो वहां पे पाटीदार का इस्तेमाल हुआ है, वॉशिंगटन का हुआ है, शबाज का हुआ है और अब भारत का हो रहा है. सो आई थिंक उनका सेट एक पैटर्न है कि 6 के बाद मैक्सवेल और 10-11 के बाद एबी डिविलियर्स. और ये जो डिसीजन होते हैं ऑब्वियसली एबी के हिसाब से ही होते हैं, विथ हिज कंसेंट. ऐसा तो नहीं कि ये इतने सीनियर प्लेयर और इतने लेजेंडरी प्लेयर हैं कि आप उनको आप डिक्टेट तो नहीं करेंगे. अब ऑब्वियसली दैट वुड कम फ्रॉम हिम एज वेल. तो मुझे नहीं लगता कि नंबर वाइज आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर विराट और देवदत्त 10 ओवर तक खेल जाते हैं. आई वोंट बी सरप्राइज इफ यू सी someone like ABD coming in the 11th over at number 3. तो मुझे नहीं लगता कि उनका वैसा नंबर 3, 4, 5 वैसा फिक्स्ड है. आई थिंक फेजेस में जो उनका जो प्लान है वो फेज के हिसाब से है. पहले 6 ओवर में विकेट गिरता है तो भारत वुड कम इन, 6 के बाद गिरता है तो मैक्सवेल वुड कम इन, अगर 10-11 के बाद गिरता है तो obviously ABD would come in, is what I think. Okay, should Arshdeep, Harshal, Rituraj given a chance in T20? Yeah, Arshdeep or Harshal can look into it. Harshal और Arshdeep definitely. ऋतुराज भी, बट ऋतुराज का यही है कि यार जो ओपनिंग स्लॉट, इनफैक्ट कल इयान बिशप से बात हो रही थी, ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, हाउ डू यू सी ऋतुराज. मैंने कहा ऑब्वियसली ही इज टैलेंटेड एंड ऑब्वियसली ही इज गुड इनफ टू प्ले इंटरनेशनल लेवल जिस तरीके से बैट कर रहे हैं. लेकिन अगर आप देखें द रिसोर्सेज दैट आर ऑलरेडी देयर, आप विराट को अगर ओपनर के हिसाब से नहीं भी देख रहे हैं, you have Rohit, you have Shikhar, you have KL Rahul, you have Prithvi, Ruturaj, you have Devdutt Padikkal. So, I mean, we are actually, I mean, Indian cricket is kind of, brimming with resources, at least top slots के लिए. But yeah, I mean, Ruturaj would love to see him, और जिस फॉर्म में इस वक्त हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, it's a tough one. किसकी जगह tough one. Okay, also predict the bowling attack of India in T20 World Cup. Bumrah. Yeah, it'll be interesting to see. Bumrah तो होंगे ही. Varun Chakravarti, Jadeja, Hardik, and obviously Shami or Bhuvi के बीच में one of them. It'll be interesting who gets in. Current form, I might pick Shami actually. Right, I think I've answered all your questions there. Agla, Viraj, okay, views on Ishan drop from the franchise team few days before World Cup. It's hard, isn't it? It is so hard, youngster ke upar. But franchise cricket or professional world it's hardcore, it's brutal. You can understand, क्योंकि ईशान का जो फॉर्म था, इट जस्ट डिड नॉट लुक राइट. और जो आई एम श्योर अगर मुंबई इस हालत में नहीं होती तो ईशान वुड हैव स्टिल कंटिन्यूड. बट मुंबई की हालत भी इज सो प्रिकेरियस, इट्स सो मतलब टाइट रोप है कि दे डिडंट हैव अ चॉइस. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मुंबई ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया.
You also feel for the young guy, you also feel for Ishan. But the problem is मुंबई के पास वो एल्बो रूम नहीं है, वो लग्जरी नहीं है टू कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि साथ में सूर्या भी फॉर्म में नहीं है. अगर सूर्या फॉर्म में होता है तब भी आप कह सकते हो चलो यार एक आधा और गेम देते हैं, सूर्या फॉर्म में, क्योंकि सूर्या भी फॉर्म में नहीं है, ईशान भी रन नहीं बना रहे. या इट्स अ टफ वन, बट यू गॉट टू फील फॉर द यंग गाय. बट अब मसला ये है कि फ्रॉम हियर ऑन टिल द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, 10 अक्टूबर तक ले लेते हैं, अगर ईशान नहीं खेल रहे हैं मुंबई के लिए, तब क्या होगा? We'll wait and watch. We'll wait and watch. But yeah, hopefully Ishan does well there. Yeah. Okay. Cricket talk with PY sir. How difficult for a player to change their mindset game coming from? Yeah, it's difficult. अगर मेरा ये मानना है कि the change has to start from the mind. Sorry, it's because it's more of a mindset कि आप हर एक बॉल पे you're looking to score runs and you're looking to take more risk. It is difficult. और ये मैंने काफ़ी लोगों से बोला पूछा है, काफ़ी प्लेयर्स जो हैं पूछा है यार. It is tough, it is extremely tough, but I think one of the biggest challenges इस generation के cricketers का वही है कि how do you move between 3 formats एक के बाद एक, you know, so it is difficult, but I think yeah, requirement of the hour, you know, you can't help it. Yeah. Who do we have? Himanshu Sharma. Do you think that MS Dhoni should bat at least at 4 because CSK has qualified and MS has not got much time to spend much time, right? Himanshu, मेरा ये मानना है, and I honestly think this is, I think we should stop talking about MSD the player, because we know he's past his prime, right? And he's there to lead the side, which is very important, to mentor the side, and he still has cricket left in him. मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उनके बारे में इसलिए ज़्यादा उनके बैटिंग के बारे में नहीं बात करना चाहता, बिकॉज he's been a legend यार. He's a great, he's a modern day great MSD. He's a legend, and obviously अभी जो बैटिंग कर रहे हैं, it's kind of a shadow of what MSD is, और जिस MSD को मैं जानता हूँ, जिसको मैं याद रखना चाहता हूँ. So, and most importantly, he's retired from international cricket, right? He's playing franchise cricket. There is a reason why he's still playing. जैसे मैंने कहा, to mentor, to, you know, see the team, you know, get in a good position, especially after last season. Yeah, so I think he knows that exactly, Himanshu. And most importantly, people don't realize at times, or maybe they don't recognize it. Unke chalte, he's mentored 2 3 guys who are ready to play for India. He's mentored someone like a Deepak Chahar, someone like a शार्दुल. शार्दुल पहले भी खेल रहे थे, 2 साल पहले भी दूसरे फ्रेंचाइजेस के लिए खेल रहे थे, लेकिन वी सीइंग शार्दुल, द बेस्ट वर्जन ऑफ शार्दुल एवर सिंस सीएसके आए हैं. Jadeja, I mean, we've got a finisher in Ravindra Jadeja. I mean, I don't know kitna role hai MSD ka, but I'm sure that he's got a role to play in all these guys the way they've done. So I think his contribution, we also have to recognize as a mentor to the next generation as well. Maybe he's not the same finisher anymore, but he's got Jadeja. Yaar. He's got another finisher for Chennai and for India. Yeah. So we need to appreciate that. And yeah, I mean, he's a legend. Yeah, he's an absolute legend. Anyways, next one is Austin Dikuna. Hi Austin, how you doing? In current form, who four would you retain for RCB next year? Okay, current form. Can KL be RCB captain if he decides to leave Punjab? And can Iyer be Punjab captain, as they will want to go towards a successful captain? I think, I mean, KL is a great name for Bangalore. Local boy. Um, I think he's a good captain. He comes across as a good leader. Obviously, he's a super player. Uh, yeah, I think KL is a great name. Four.
would retain? Obviously, Virat, uh, Maxwell, Particle, and I'd retain ABD. I'll have a word with ABD and see. But if his ABD wants to continue playing, I think ABD, you have UZ Chahal, but you have other leg spinners. Yeah, I mean, but four, I think, yeah, Particle, Virat, Maxwell, and ABD. After having a chat with ABD, obviously. Yeah, right. So these would be my four. Okay. Right, last few questions. Let's see. I'll have to get ready. आज भी match है. एक minute. What did Rahane and Smith gain going from RR? Both would have got more opportunities in RR. I agree. Ashish, I completely agree. I don't know what they got. I don't know. I don't know what the conversation was कि भैया क्या बात हुई थी, क्या promises किए गए थे. I don't know. So, and I agree. अगर राजस्थान में होते तो would have definitely played more games. Um, yeah, yeah. Scout with a capital O in between, or is it a zero? In coming years, can we see whole India T20I team squad will be picked based on IPL performance, keeping emotions and big names aside? I'm sure. Yeah, absolutely yes. I mean, you can't completely base your selection on the IPL, but to a great extent, yes. I mean, absolutely yes. Uh, Sorry, one second. Oopsie daisy. Sorry, वो बच नहीं रहा. But yeah, as it is अभी भी IPL के basis पे ही होता है to a great extent. But completely, for example, I think what you mean is someone like आज के दिन standing today, you might want to pick some like an Arshdeep or a Harshal Patel as a bowling unit. I think what will happen and what is happening is to a great extent 70-75% loosely speaking is based on IPL. And then you also have to look back at कि यार पिछले 6-7 महीने में कैसा हुआ, क्योंकि IPL might be extremely close to international cricket, but international cricket थोड़ा सा ऊपर है IPL के. एंड तो जिनका रिकॉर्ड पिछले 6-8 महीने में आईपीएल में सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा रहा है, यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर दैट यू कांट बी 100% IPL. But yes, I'd say to a great extent, like I said, 70%, 70-75%. For example, after the performance of Herschel, I'm sure he'll be considered. I'm sure his name will come up in selection committee meetings without a shadow of doubt. Someone like a Padikal's name or Ruturaj's name, Arshdeep's name, they will definitely come up in selection meetings. Right. Okay, last couple now. Jay Shirke साहब कह रहे हैं, sir, are you concerned about form of Bhuvi and Shami? Should India need to have another pacer? I thought India needed another pacer यार. तीन तो वैसे ही थोड़े कम है. ऊपर से as I mentioned before, हार्दिक बॉल नहीं डाल रहे, अभी तक नहीं डाल रहे हैं. I'm sure he will. तो या और फॉर्म की बात, यस, थोड़ा सा भूवी का है. शामी स्टिल ऑलराइट. आई थिंक शामी एक्चुअली इज नॉट बोलिंग दैट पोअरली. अगर शामी का क्या होता है ना कि वो करके निकल जाते हैं, बट इफ यू लुक एट हिज रिकॉर्ड्स इस साल के भी नंबर्स, इट्स नॉट दैट बैड. बट या विद भूवी लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न. और तीन सीमर, यस, थोड़ा सा वो देखने वाली बात जरूर होगी. राइट, लास्ट क्वेश्चन. Server monkeys. What is your view on Cole versus Punjab? जैसे मैंने कहा, Cole versus Punjab, I think momentum wise Kolkata is ahead. They're playing better cricket and more consistent cricket. Punjab का वही है, they've been very inconsistent, ऊपर नीचे और रहा है. Punjab depends a lot on the opening pair, and for both the teams, I think the bowlers have done really well. I think Arshdeep, Bishnoi, Shami have been standout. I thought they were really well. दूसरी तरफ you have obviously
वरुण, the other important thing देखने लायक बात होगी कि पिछले मैच में आई सॉ वरुण थोड़ा से लंगड़ाते हुए. He's obviously he's had a string of injuries. It'll be interesting to see whether he's playing today or not. So please वो एक आप देख लीजिएगा, मुझे भी देखना है, because he was injured last game. He was struggling last game. थोड़ा सा निगल होगा, कुछ भी होगा. So yeah, I think I think it's going to be a good game, but I think my favorites would be Kolkata before the game. जैसे मैंने कहा before, because जो consistent cricket खेल रहे हैं कोलकाता. Well, that's that. Thank you everyone for tuning in. Thank you so very much uh, for all your questions, for spending the last 45 minutes with me. So please keep tuning in. Do subscribe and do share the videos. Almost every day videos आ रहे हैं. Every day नहीं तो every second, third day आ रहे हैं. So please keep subscribing and keep sharing. And I'll be back again live sometime soon. Thank you again for spending the last 45 minutes. Spending it with me. And I'll see you soon. Thank you. Take care.